Assalamualaikum everyone. Welcome to the Photon Exchange podcast. We have with us for our fourth episode Dr. Athar Osama. He's a renowned innovator in Pakistan, as well as and has his PhD in public policy. Before we start, Dr. Osama, could you give us a brief introduction? My name is Athar Osama, and I'm an aeronautical engineer by my first degree. And then I went on to study public policy for my PhD and have been a policy researcher and an advisor since then. I'm also the founder of STEMX, a platform for high school students to get experiential STEM learning and education. We take high school students from all across Pakistan and take them to Pakistan's leading universities and put them in front of the best professors, and then magic happens. In addition to that, I'm also involved in STEM education. We run a project for training science teachers from 6th to 8th grade across Pakistan and outside Pakistan as well. So you mentioned a range of things that you've done over your career, from avionics to your PhD in public policy to your efforts which are currently in edtech. You have these range of fields, right? And why do you think that you made the huge switch from first avionics to public policy, now working on edtech? Do you think it was something that was just within you, or do you think that it was something that you fostered from the environment which you were, for example, brought up in? So to be honest, when I started off as obviously as a professional engineer. I went to the Air Force Academy. I joined PIA. I had a job for life essentially, but I wasn't really really happy with what I was doing, and and I became interested in economics and got myself admitted in a PhD program in the US, and then I decided to leave. And while I was leaving, I tried to see advice. There was a gentleman here who had been abroad and come back to Pakistan. In those days, we didn't come across too many people who had been abroad and returned back to Pakistan as professionals. So I asked for advice. I said, okay, what should I do? This is what I really want to do, but I don't know what I will do when I come back to Pakistan. Is this a field for which there is scope in Pakistan? Scope is a word a lot of us used at the time. It still is used. So he gave me a very interesting piece of advice. This was a single most important piece of advice that anybody has ever given me. He said, Athar, if this is what you love, then just go ahead and do it. You will create your own job. These were literally his words, and this is exactly what has happened to me. For the last 25 years or so, sir, I've been a professional. I have only worked for somebody, for a job for 6 to 8 years. Out of those, 3 years were in the government. So if you discount that, I've actually worked right the first 5 years immediately after my PhD, and since then I've kind of really worked for myself. I found interests and passions that I pursue, and I just go ahead and do them. And Allah Taala has found always finds a way to pay me for that, and I'm really really thankful for this. And I also tell young kids not to really worry about what they're going to do. Right? Aim high. Try to find your passions and then go after them. Let this whole business of what you're going to do afterwards to a decision later on. So this is what I do. A lot of my friends who follow me on social media tell me they ask me, what is it that you actually do? And I tell them I just do what I really want to do, and somehow things just work out. So I've had this thing all my life. I've been doing different sorts of things. My interests evolve over time. So I remember after I decided I didn't want to be an engineer, obviously I went to do my PhD. And I worked on my PhD for about 5.5 years, and the last 3 years were really intense. I was doing a lot of research and trying to come up with my dissertation, and that kind of bored me a little bit. Right, the cycles
the time cycles in which you do research are very long, right? So it takes 3 4 5 years for you to kind of build up towards the final publications and the final kudos that you get. So I said, oh, I don't want to work on these long time cycles. I really want to get into consulting. Consulting time cycles are very short. You get to see results in 3 to 6 months, and then you can move on to to a different project. So I got into consulting after that, and after working in consulting for about 5 years, I came to the conclusion that consulting का problem ये है कि whatever advice you give as a consultant, your client most often doesn't really take your advice, right? So you are left with this idea कि मैंने तो इतनी मेहनत की और इतनी मैंने इसको advice दी अच्छी, और इसने मेरी advice बिल्कुल अमल ही नहीं किया. So then I said, okay, I don't want to do consulting anymore. I actually want to do implementation. I want to take my own advice and actually implement it. And initially, when I moved back to Pakistan, I was very hesitant. I didn't know whether I could be an implementer or not. But I started this non-profit called Pakistan Innovation Foundation, and for the next 5 years, I did implementation. I had conceived of all these ideas, when I was living in the US and UK, and I wanted to implement all those ideas in Pakistan. So I ran a number of different programs. We did some really interesting things, and 5 years later, I kind of got tired of that as well. Then I took a break and went into the government and did government for 3 years, and since then I'm doing this STEM program and science education. So essentially, my I think so one, I choose to do what I want to do, and two, my interests also change and evolve every 5 to 7 years. And I think that's a good thing. I don't think that's a bad thing. It may have obviously some implications on my own career path and where I want to get and how I got there, but I find work of more interesting nature, and I kind of shift towards that kind of work, and that interest keeps me going. Sir, some people could call you like a jack of all trades, and you've had a very diverse career. Like you have been the managing partner of LA, founder and CEO of STEMX, founder and chief executive of Pakistan Innovation Foundation, editor of MuslimScience.com, Angle Technology Director, and so many more projects and organizations. Now, did you do all this work to be a guest on our podcast, or was there like a reason behind your motivation to work on so many projects simultaneously and organize yourself accordingly? So, so as I said, I do things that interest me, right? And sometimes I've created organizations and companies just to that I'm interested in, right? So I run a non-profit in Pakistan. It served its purpose for a little while. When I went to the government, it sort of went out of business. So since then, since I've left the government, I haven't really restarted that organization yet. But I currently have a non-profit based out of the UK as well, through which I run this science teaching program. STEM is itself a separate venture. So obviously, you could have done all these things under one name, and that would have maybe worked out, but sometimes these things have different identities and different ways of growing. So I've created these number of organizations just to enable me to do the kind of work I want to do, right? As I said, my primary interest is in doing interesting stuff. I can't for the life of me do something day in and day out in a boring way all my life, right? So I have to find something new, something interesting, something and so I put myself consciously into these kinds of challenges, and again, it sort of works for me. So I'm really happy, and hopefully it creates some value for the society as well. So I think it's a win-win. Sir, you mentioned how you have, these diverse talents and diverse specialities. Do you think this is what it takes to be successful in today's world, to be a specialized person in one field while being also a generalist in a lot of others? कुछ चीजों में specialization is important, and I'm not saying that specialization doesn't have its value. कुछ चीजों में diversity is also important, right? So one of the things that my friends tell me, that they say is quite unique about you, is that you know so many people, right? Now this doesn't happen
this didn't happen consciously. It happened because, again, I have various sorts of networks. I hang out amongst entrepreneurs. I hang out among innovators. I hang out among academics as well. I have all kinds of people who I know by virtue of the various kinds of things that I've done. So that is sometimes a very powerful skill. Oftentimes बहुत सारी चीजें मैं ऐसी भी करता हूँ जिसमें मेरा अपना रोल शायद सिर्फ फैसिलिटेटर का होता है, right? And I can do them, I can make them happen because because I can call up on a lot of people to contribute towards that. And a lot of my friends and a lot of people who know obviously contribute when I ask them to contribute, just because they probably also feel कि जो चीजें मैं कर रहा हूँ उसमें कोई value है, right? So there's a lot of thing that goes into creating partnerships, bringing people together, making ideas happen, that somebody with a very narrow skill set would probably not be able to do so easily, right? A lot of people, a lot of brilliant, scientists and academics who have very narrow skill sets come to me and ask for my advice on how they can do X, Y, Z, and they come to me because there is something special in my skill set that they value. Right? तो मुझे लगता है कि again, this could have been a choice. I feel that I'm an expert in maybe one or two things. I can sometimes visualize things beyond what other people can see, and trying to organize teams and efforts around those visualizations. And I think that's an interesting skill to have, and it has served me well so far. Sir, we know that you're the founder of Pakistan Innovation Foundation. So what we want to ask you is, like, what has been your goal with the STEM school so far? And do you think that the STEM school mitigates for the lack of hands-on teaching in educational curriculum? Well, STEM school tries to do a small little thing for a small number of kids, right? It's a passion project that started about 8-9 years ago. 2015 May, I and Dr. Sabi Anwar, who was the former dean of School of Engineering at LUMS, were sitting together. And Sabi and I know each other from his days at Oxford University. We used to have a mutual friend, and I used to hang out at Oxford University with that friend of mine. So Sabi और मैं बैठे हुए थे, and Sabi told me that he has done this really interesting hands-on science, hands-on physics course. He called it Physics Studio for the undergraduate students at LUMS. And he told me, Athar, I would really like to do this for high school students as well. So can you get me like 5-6 high school students so that I can do this Physics Studio course with them? So I said to Sabi, okay, Sabi, I will, if I go out and find young students, I will not just find 5-6, I will probably find 30-40. And it will not just be for you. We'll bring in some other interesting faculty members, and we want to do this STEM program where kids will experience hands-on STEM, in a real life environment in a university, which is at least 2 notches above what is possible in a school. So we ran this program for the first time in 2016 in December, and it was an amazing success. It has since been replicated many times. I think we have over 400-500 students who have graduated from the program. Many of them have done really amazing things. So it's a unique program in Pakistan. I feel this is the way science should be taught, right? By actually experiencing and doing, learning by doing rather than teaching somebody on a board. So मुझे लगता है कि this is how science should be taught. Unfortunately, it's a program that is not scalable in that way for the entire country, but obviously trying our best to create a model, and we are very open for anybody else to copy that model as well. A few months back, Dr. Umar Saif, who was the minister in the caretaker government, announced that they want to start 10 STEM schools across the country every year, and we kind of welcome that idea. I think we love we love competition. We say इस किस्म की चीजें पैशन के बगैर नहीं हो सकती. ये कोई किसी की सरकारी नौकरी नहीं है. This is not my job. It doesn't pay me. It is not Sabi's job. We all do it out of the passion of our hearts, and we can only do this well if we do it with a with a passion rather than
somebody asking us to do it or somebody paying us to do it. So that's about it. I think we are trying our best to create a small little model, make a small difference, and I hope that other people will also follow in the course. I personally believe that nobody should make a career decision without actually experiencing what he or she wants to do. ठीक है, तो मेरे ख्याल में every student in Pakistan who's about to make a university choice or a career decision should have an experience like a STEM school, so that they can make a better decision. And that's what we really believe in, and that's what we always advise people to do. So you have furthered this policy in other projects as well. For example, the holistic science teaching fellowship that you do, right? Do you think that the teachers which are trained in those fellowship, that it's a required course essentially for all teachers in Pakistan to have to go through this fellowship and to have to learn holistic science teaching in a way that is more perceivable for all students in the class? And do you think that teaching science through visuals, just as you said right now, is very important to essentially understanding and proliferation of science, not only in Pakistan but internationally? So holistic science is a different initiative which is actually a lot more scalable and promising than the STEM school. क्योंकि holistic science में हम teachers को train करते हैं, and if you create a good teacher, you can create hundreds of good inspired students as a result of that, right? So we teach 6th to 8th grade science teachers to teach science holistically, and by holistically we mean they need to teach science in a way that it is connected with other branches of knowledge. ऐसा नहीं हो कि students को ये लगे कि हम ये science क्यों पढ़, right? Teachers, I interview a lot of teachers, and a lot of time teachers tell me कि हमारे बच्चे जो हैं वो साइंस में इंटरेस्टेड ही नहीं. वो हमसे पूछते हैं कि हम साइंस क्यों पढ़े, हमने तो आगे जाके साइंस पढ़नी नहीं है, तो व्हाई शुड वी स्टडी साइंस नाउ, राइट? एंड आई टेल देम कि अच्छा फिर आप क्या करती हैं? तो वो कहते हैं हमें समझ ही नहीं आती कि हम क्या करें, तो हम बस क्लास में आके साइंस पढ़ाना शुरू कर देते हैं, और हमें पता है कि आधे से ज़्यादा बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है. तो व्हाट वी हैव डेवलप्ड इज अ वे इन विच वी try to encourage students to be curious. Kids are curious by design. They are born curious. When they are small, they ask all kinds of questions, and then something happens in the school, and kids stop being curious. And part of the things that happen is exams, because they start studying for exams, and part of the thing is that teachers don't know how to answer their questions, right? एक बच्चा साइंस क्लासरूम में किसी किस्म का भी सवाल पूछ सकता है. वो एक साइंटिफिक सवाल पूछ सकता है, वो एक एथिकल सवाल पूछ सकता है, वो एक रिलीजियस सवाल पूछ सकता है, वो एक फिलोसॉफिकल सवाल भी पूछ सकता है. और जब टीचर को ट्रेनिंग नहीं होती इस किस्म के क्वेश्चंस को आंसर करने की, तो वो या तो बच्चे को कहते हैं चुप होकर बैठ जाओ, या फिर वो उसको गलत तरीके से आंसर करते हैं, और उसके बाद फिर बच्चा दोबारा कभी सवाल नहीं पूछता, राइट? सो व्हाट वी ट्राई टू डू इज आर पेडागोजी इज कॉल्ड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस. We try to make the teachers understand कि बच्चा जो सवाल पूछ रहा है ये किस किस्म का सवाल है और इसका जवाब कैसे देना है, ठीक है ना? और क्यूरियोसिटी को हम इनकरेज करते हैं. टीचर्स को हम कहते हैं कि क्लास में व्हाट वी कॉल बिग क्वेश्चंस, सो क्वेश्चंस दैट stem from science but go beyond science. For example, what is the meaning of life, right? What is consciousness? Is it good to do genetic engineering or not, right? These are all questions that start from science but they have implications beyond science. So we train teachers on asking these kinds of questions and answering these kinds of questions. And over the last several years that we have done this, we've trained about 300 plus teachers in Pakistan, Indonesia, Algeria, Malaysia, and Brunei. And a lot of these teachers come back to us and tell us कि जब हमने होलिस्टिकली क्लास में पढ़ाना शुरू किया तो एकदम से हमारी क्लास में जान आ गई. Suddenly kids start asking questions. We started enjoying teaching ourselves. Teachers tell us कि हम साइंस पढ़ा के बोर हो गए थे, लेकिन जब हमने होलिस्टिकली पढ़ाना शुरू किया तो हमें खुद मजा आना शुरू हो गया. And the students started enjoying it, and we started getting parents who would come to me and say कि ये क्लास में क्या हो रहा है, बच्चे डिनर टेबल पे अजीब किस्म के सवाल पूछ रहे, राइट? तो हमारी नजर में द होल बेसिस ऑफ साइंस इज क्यूरियोसिटी. अगर आप इसमें से क्यूरियोसिटी को खत्म कर दें तो साइंस खत्म हो जाती है, राइट? अगर हमने अपने बच्चों को वो सवाल पूछना नहीं सिखाया और उनके जवाब नहीं दिए, तो हमने उनको साइंस नहीं पढ़ाई, हमने उनको पता नहीं क्या पढ़ाया,
right? So this is what we are trying to do at the school level, and we are working with several large schools and schools chains as well. We are now beginning to train master trainers so that the schools can maybe provide some oversight. But this is, I think, something that I really feel passionate about. हमें हमें अपने बच्चों को और साइंटिस्ट को साइंस के बियॉन्ड जो सवाल होते हैं ना, अक्सर अक्सर साइंटिस्ट जो है ना, वो मेजर ब्रेक थ्रू साइंस में उस वक्त करते हैं जब वो फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पूछते हैं. So, to me, Einstein was a much bigger philosopher than he was a scientist. ठीक है, उसने उसने साइंस में चीजें की, लेकिन उसके बहुत सारे जो लीप्स ऑफ फेथ है ना, जो उसकी थेरीज हैं, दोज आर फिलोसॉफिकल लीप्स ऑफ फेथ. हमारा मसला ये है कि हमने अपनी साइंटिस्ट की ट्रेनिंग इतनी नैरो कर दी है कि उनको तो शायद ये भी नहीं पता कि फिलोसफी होती क्या है. ना उन्होंने कभी फिलोसफी ऑफ साइंस पढ़ी. आई थिंक इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ट्रेन आवर यंग किड्स टू आस्क ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, टू बी क्यूरियस, and to really take that next leap towards a scientific breakthrough, which is to ask big questions and then obviously pursue those big questions. Sir, I definitely agree with that. Sir, as you said that this project of yours is very scalable, how do you think, because you also are very active in the entrepreneurship space, right? How do you think governments and private sector industries can work together to scale this to a larger scale, essentially in provinces other than, for example, the major universities? For example, the University of Peshawar भी एक बड़ी university है relatively in Pakistan, वहाँ भी हो सकता है for more access to kids near Balochistan or KPK or Gilgit. So how do you think that is possible, और अगर है तो कैसे करना चाहिए हमें? Yeah, so I've been a student of public policy for over 25 years now. And I've seen public policy in Pakistan from very up close. I've also worked in the government. I know the capabilities of the government. और मेरा जो recent thesis है वो ये है कि एक तो हमें पाकिस्तान में पब्लिक पॉलिसी की समझ ही नहीं आती कि पब्लिक पॉलिसी होती क्या है. हम जब किसी चीज़ की पॉलिसी बनाते हैं तो हम समझते हैं कि जब तक 100 पेज की पॉलिसी नहीं बनेगी उस वक्त तक वो पॉलिसी नहीं है, राइट? मेरी नज़र में पॉलिसी जो है ना, इट मीन्स मेकिंग डिसीजंस विच आर डिफरेंट फ्रॉम द स्टेटस को, राइट? तो जब तक आप वो रेडिकली डिफरेंट डिसीजंस करने को तैयार ना हो तो पॉलिसी मेक्स नो सेंस. इफ इन 100-page डॉक्यूमेंट आई एम जस्ट सेइंग द सेम थिंग्स दैट आई हैव बीन डूइंग इन द लास्ट सेवरल ईयर्स, तो उस पॉलिसी का क्या फायदा, राइट? हम तो वही बात रिपीट कर रहे हैं, हम स्टेटस को के पीछे जा रहे हैं. दूसरा जो मेरा एक व्यू है वो ये है कि आई थिंक वी नीड टू टेक अ वेरी डिम व्यू ऑफ गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट पॉलिसी, particularly in a place like पाकिस्तान. हमारे यहाँ कोई सिविल सर्विस, कोई मेरिटोक्रेसी नहीं है. यहाँ पे लोगों को परफॉर्मेंस की बेस पे तनख्वाहें नहीं मिलती. तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक शख्स को जिसको आपने लाइफ टेन्योर दिया हुआ है, जो पिछले 20 साल से वही काम कर रहा है, वो एक दिन आपकी पॉलिसी के चक्कर में वो कुछ नई चीजें इंप्लीमेंट करना शुरू कर देगा, राइट? तो आई थिंक वी नीड टू टेक अ वेरी डिम व्यू ऑफ व्हाट public sector organizations and the public sector can achieve in this country. मैंने पिछले कई सालों से, again after my work in the government as well, I've tried to promote this idea that we should pursue what I call self-executing policies, right? Self-executing policies वो होती हैं जिनमें किसी इंसान को, किसी सिविल सर्वेंट को जरूरत नहीं होती कि वह हर रोज सुबह उठे और वो ये प्लान करे कि आज मैंने इस पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट करना है, या किसी इंसान के इख्तियार में हो. ठीक है, तो जो एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग पॉलिसी की एग्जांपल है वो ये है कि 1990s में, बिफोर द टेलीकॉम रेवोल्यूशन स्टार्टेड, वी यूज्ड टू हैव दिस पॉलिसी जिसमें जो जिस शख्स को फोन आता था, मोबाइल फोन आता था, वो पे करता था, राइट? शुरू में बिलिंग मैकेनिज्म इस तरह का होता था कि जिसको फोन आता था वो पे करता था, वो भी पे करता था एटलीस्ट. तो लोगों को फोन आते थे और अननोन नंबर से फोन आते थे और वो फोन उठाते नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि वो उठा लेंगे तो उनको कोई चार्ज हो जाएगा. तो 1990s में हुकूमत पाकिस्तान ने और दूसरी जगहों पे भी दुनिया में एक सिंपल पॉलिसी चेंज आई विच वाज कॉल्ड कॉलिंग पार्टी पेज. उसका मतलब ये था कि अगर मैं कॉल करूंगा तो उसको पे मैं करूंगा.
ठीक है ना. तो सडनली विद अ सिंपल चेंज इन पॉलिसी, एंड ऑल दिस रिक्वायर्ड वाज अ चेंज इन द बिलिंग सिस्टम ऑफ द टेलकोस, कि अब जो कॉल कर रहा है उसको आप बिल करें. ठीक है, अब इस एक दफा ये चेंज हो गई उसके बिलिंग सिस्टम में, तो अब किसी इंसान को जरूरत नहीं है इसको मॉनिटर करने की. ठीक है ना. द मोमेंट दिस हैपेंड, वी सॉ अ बूम ऑफ टेलीकॉम इंडस्ट्री इन पाकिस्तान. For 20 years we saw telecom industry booming in Pakistan and contributing significantly to Pakistan's GDP. So this is a perfect example of a self-executing policy, right? इसमें किसी शख्स को implement करने की, आपको महकमा बनाने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत सारे लोगों को ऑर्गेनाइज करके कुछ इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है. ये एक सिंपल ट्वीक है जो कि सेल्फ एग्जीक्यूट कर रहा है. अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा कि इसकी कोई और एग्जांपल बताएं, तो मैंने पिछले दिनों बल्कि इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है. सो अगर आप पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल एजुकेशन सिस्टम चेंज करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि जी बच्चे हमारे जो है ना रट्टा लगा रहे हैं और हमारे एग्जाम्स वो नहीं है, ये नहीं है, तो आप कहें कि भाई आज से 3 साल के बाद जो एग्जाम होगा, कैम्ब्रिज सिस्टम तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो हमारे हमारे बोर्ड के एग्जाम्स हैं, जो जो एग्जाम होगा वो कंसेप्चुअल सवालों की बेसिस पे होगा. 3 साल के बाद होगा लेकिन, राइट. तो आपने लोगों को 3 साल की वार्निंग दे दी. जो बच्चा आज 9th ग्रेड में है वो वैसे ही एग्जाम देगा जैसे वो दे रहा है, जो 10th ग्रेड में है वैसे देगा. लेकिन जो आज 8th ग्रेड में आ रहा है वो आज से 3 साल के बाद जो एग्जाम देगा वो उसका कंसेप्चुअल टेस्ट होगा, उसमें कोर्स कोई नहीं होगा, वगैरह वगैरह. ठीक है ना. अब आपने एसेंशियली, आपको कोई करिकुलम बनाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपने ये पॉलिसी डिक्लेयर कर दी और फिर आपने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया. अब ये टीचर्स का और उन बच्चों का उनका मसला है कि वो किस तरह पढ़े. ठीक है ना. और 3 साल के बाद हो सकता है कुछ कुछ बच्चे फेल हो जाएं, उससे अगले साल लोग और मेहनत करेंगे और अल्टीमेटली 3 से 5 साल में ये पॉलिसी अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर देगी. ठीक है ना. तो अगेन यू आर टेकिंग पॉलिसी अवे फ्रॉम फ्रॉम गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स who have no capacity to implement it. You are doing it in a way that it self executes. ठीक है ना. तो दैट्स माय idea of how we should pursue policy in this country, and there are examples of countries around the world who have tried to do that. जहां तक ये दूसरी चीजों का ख्याल है, मेरा ये ख्याल है कि एक चीज जो हमारे मुल्क में सही नहीं है वो ये है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की रिलेशनशिप जो है ना वो बिल्कुल सही नहीं. तो अगर हमारे यहाँ गवर्नमेंट जब सोचती है कोई चीज इंप्लीमेंट करने को, तो वो कहती है सारा सारा का सारा मैं करूंगा, क्योंकि मुझे प्राइवेट सेक्टर पे कोई ट्रस्ट नहीं है. और प्राइवेट सेक्टर भी अगेन प्रॉपरली इन्वॉल्व नहीं होता, वो उनके मसाइल भी हैं, वो भी थोड़े से मायोपिक हैं. लेकिन आई बिलीव दैट अगर हमें चीज़ों को सही तरह एग्जीक्यूट करना है, बोथ इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह, तो हमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की प्रॉपर पार्टनरशिप्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एग्जीक्यूशन तो प्राइवेट सेक्टर ही कर सकता है, एंड दे कैन ओनली एग्जीक्यूट इन एरियाज वेयर दे हैव अ इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू एग्जीक्यूट. ठीक है. गवर्नमेंट दुनिया में कहीं वैल्यू क्रिएट नहीं करती. The government can set the ruling, but they do not have the means to create value. So I think that's how I think we need to move somehow. I've written recently a bunch of articles on the Friday Times talking about some of these things. I feel कि मैंने पाकिस्तान में 15-20 साल काम कर लिया है और अब मुझे कुछ चीजें जो है ना वो लिख देनी चाहिए. तो I'm trying to work on a book as well, but I'm also beginning to write more openly about some of this stuff. Because these are sort of my own experiences. I talk to my friends about them, but I feel it's now time that I start saying some of these things openly. Sir, we know that you also work with the government of Pakistan for like education purposes, right? For what purposes? For like education and curriculum development. वेल नहीं, मैं गवर्नमेंट के साथ, टू बी ऑनेस्ट, मैं गवर्नमेंट के साथ अभी तक मैंने एजुकेशन में कुछ ज्यादा काम नहीं किया. इनफैक्ट आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम द गवर्नमेंट एज मच एज पॉसिबल. अगेन जो चीजें मैं कर रहा हूँ, दे आर ओपन फॉर एनीबडी टू लर्न फ्रॉम और कॉपी, बट आई एम it's very hard to work with the government. I've been in the government. I know how the government works, right? And I know it's very hard to work with the government. Government के अपने objectives होते हैं, right? वहाँ पे जो लोग होते हैं वो अपनी नौकरियां बनाने के पीछे लगे होते हैं, वो अपनी प्रमोशन के पीछे लगे होते हैं, वो यस सर के चक्कर में होते हैं, वो लोगों की तारीफें करते हैं जिनसे उनको कुछ फायदा मिलता है.
उनका काम वैल्यू क्रिएट करना नहीं होता। तो अगर आप वैल्यू क्रिएट करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप गवर्नमेंट से दूर रह के चलें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, वी आर ऑलवेज ओपन टू शेयर आवर आइडियाज विद पीपल, एंड इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू copy some of these things, they can take them and copy them. We want things to scale ultimately, because पाकिस्तान का फायदा उसी वक्त होगा, पाकिस्तान के हालात उसी वक्त बदलेंगे जब तक सारे बच्चे और सारे टीचर्स इस तरह काम नहीं करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट के साथ काम करना काफी मुश्किल काम, उसमें आपका अपना इनिशिएटिव डाइल्यूट हो जाता है असल में। Sir, so you have to either state, we'll tell you a statement and you have to tell us if you agree with the statement or disagree with the statement. Okay. So the first statement is entrepreneurship is the key to Pakistan's economic growth. Agreed. Government should play a bigger role in fostering innovation in the private sector. Disagree. Public venture capital is more effective than private venture capital in emerging markets. Disagree. Technology policy should focus more on infrastructure development. Agree. In the future, developing countries will surpass developed countries in innovation. Well, they will become developed countries. So China is a developing country now. It will surpass the world and become a developed country. So do you think developing countries will become developed countries? Yeah. Artificial intelligence will disrupt more industries than internet did. Agreed. Clean energy technologies should be the top priority for innovation policy. Well, yes, should be. Not the top priority, but a big priority. A focus on STEM education alone is not enough to drive innovation. Agreed. Developing countries should prioritize infrastructure over technology in the short term. Somewhat agree. There are another one. Ethics significantly hinder synthetic biology and our development. And what? Synthetic biology and its development. Significantly hinders. Why? No, agree. Disagree. So why do you think that? No, why would edtech hinder synthetic biology? Ethics. Ethics. Yes. Ethics hinder synthetic biology. Well, I think ethics is more important than synthetic biology. So why do you think that? So I've been reading this book lately, जो क्रिस्पर की इन्वेंटर है जेनिफर डाउडना की बुक की जो लाइफ हिस्ट्री है, it's quite amazing because almost half of the book is about the ethical questions that technology raises, and she very deliberately and very consciously delves into why is it ethically important to use this technology properly, right? उसने काफी डिटेल में उसके ऊपर डिस्कशन की है. I think it's really important for us to understand the long-term implications of technologies that are going to make fundamental changes to the way we live. Would we want to live in the world where only the rich have access to a life that has no diseases, and which is they have all kinds of these biological superpowers, and the poor are always condemned to the worst circumstances? उसने तो और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं. सो फॉर एग्जांपल, एक चीज जो वो कह रही है वो ये कह रही है कि अक्सर जिंदगी में मेजर अचीवमेंट उस वक्त होती है जब कोई स्ट्रगल होती है, राइट? वो स्ट्रगल डिजीज की वजह से भी हो सकती है, वो डिप्रेशन की वजह से भी हो सकती है. बहुत सारे मेजर ऑथर्स, प्रिंटर्स, शायर, ये सारे लोग जहनी जहनी मर्जों में मुब्तला होके शायर और अदीब और ऑथर्स बने. तो वुड वी इवन वांट टू लिव इन द वर्ल्ड वेयर a Picasso would never be born, because we have eradicated all kinds of mental diseases where everybody is perfect and there is no there is no struggle and there is no this kind of fighting against odds? So there are some really interesting questions
that genetic engineering raises, synthetic biology raises, which at least I feel that we need to think carefully about before we kind of open the floodgates, right? तो अभी सोसाइटी को और सिंथेटिक बायोलॉजी में एक्चुअली ये चीज बड़े इजियर तरीके से हुई है। सिंथेटिक बायोलॉजी में जो टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई हैं उसके उसके ऊपर हमने ह्यूमैनिटी ने बेहतर तरीके से कंट्रोल एक्सरसाइज किया है। मुझे लग रहा है कि एआई में थिंग्स हैव जस्ट गॉन आउट ऑफ कंट्रोल, राइट? और एआई में तो अगेन उसकी एक रीजन ये भी है कि सिंथेटिक बायोलॉजी में देयर weren't many technologies that were many of these cutting edge technologies were invented in universities rather than companies, profit making companies. AI में many of these cutting edge technologies have been invented in profit making companies, तो उनका profit motive जो है वो उनको ड्राइव करता है कि वो बाय हुक और बाय क्रुक वो टेक्नोलॉजी को सेल करें। अब ये जो सारा एआई का रेवोल्यूशन हो रहा है ये हो तो रहा है, राइट? लेकिन आपको पता है कि इस सारे रेवोल्यूशन में हम क्लाइमेट चेंज को भूल गए, right? The amount of energy that we are using every time we use chat gpt is just insane, right? So we've totally forgotten about climate change and we are just moving on to this AI revolution, and it seems like it's going to solve every problem. It's not going to solve every problem. It's probably going to create more problems. और problem ये है कि यहाँ पे unlike synthetic biology there is no proper regulation and control. We just have given it up to these big billionaires के जो अपना एजेंडा पुश कर रहे हैं to become from billionaires to trillionaires. लेकिन मुझे लगता है कि इसका हमें बहुत नुकसान होगा और हमें ये इस किस्म की चेंजेस जो हैं वो सोच के करनी चाहिए। Sir, There but should be a thought process behind it. sir, but don't you think that every major revolution comes with its disadvantages? Like how when the internet was first introduced, everybody thought that it would like new with every new technology, new issues will always come. Like we had cybersecurity issues then and So, other kinds of so problems. every revolution comes with some advantages and some disadvantages. So do you think that Right? this Do AI you think do revolution you think has social media की कोई advantage है? Is there any advantage of social media? spreading What? of word, raising awareness, You think community? you stay abreast of what's happening in the world, but in the process you end up wasting 4 hours of your life But then again, you that just you would have spent with your family. Eh? yeah, I think certain benefits are they're not heavy enough to outweigh the disadvantages, but I think it's not fair to say that social media is completely useless. Personally, I don't think कि social media की कोई इतनी बड़ी advantages हैं. It has created narcissism in the society. It has created all kinds of ills in the society. अब ये fake news और ये सारा कुछ जो चल रहा है इसकी कोई advantage नहीं है, राइट? तो मतलब रेवोल्यूशन अच्छे भी होते हैं, रेवोल्यूशन बुरे भी होते हैं, लेकिन और हर रेवोल्यूशन की अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों होती हैं। लेकिन समटाइम्स रेवोल्यूशन आई फील के इंटरनेट की मे भी कोई एडवांटेज हो, लेकिन ये जो सोशल मीडिया रेवोल्यूशन है इसकी कोई खास एडवांटेज नहीं है अदर देन द फैक्ट दैट इट मेक्स अस फील दैट वी आर कनेक्टेड विद पीपल। लेकिन वो एक बड़ी मजे की स्टोरी है कि वो एक बंदा जिसके फेसबुक पे कुछ 10,000 फॉलोअर्स थे, जब उसकी डेथ हुई तो उसके जनाजे में 2 लोग आए। तो लोगों ने कहा कि भाई ये 2 लोग क्यों आए, तुम्हारे तो 10,000 फ्रेंड्स थे। उन्होंने कहा वो सारे के सारे फेसबुक पे थे सिर्फ, राइट? दे वर नॉट रियल फ्रेंड्स। तो ये देयर आर ऑलवेज थिंग्स गुड एंड बैड। earlier in the podcast you mentioned कि कैसे connections or connectivity is very important, or a common way people do that is through LinkedIn, which is also social media, and this is something you're active on as well. Would you say कि LinkedIn का इस्तेमाल and over connections is a positive sort of aspect of our business and of our professional lives, or is it still hindering us? Well, it's difficult for me to say कि net पॉजिटिव है या net नेगेटिव है, लेकिन LinkedIn is still a better place. I never became an active member of Twitter because I just felt that Twitter was just so insane that you are almost online 24 hours if you want to be active on Twitter, right? So Facebook पे आपने हफ्ते में एक पोस्ट कर दी, महीने में एक पोस्ट कर दी, चलो कोई बात नहीं,
लेकिन ट्विटर पे ये नहीं हो सकता कि आप हफ्ते महीने में एक दफा करें, राइट? तो लिंक्डइन को आप प्रोफेशनली यूज करते हैं, आई थिंक इट हैज अ नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट परहैप्स। लेकिन ये जो ओवरऑल सोशल मीडिया की फेसबुक एंड ऑल दिस स्टफ, आई थिंक इट हैज क्रिएटेड मोर इल्स इन द सोसाइटी देन इट हैज सॉल्व। Sir, so do you think that this AI revolution will have more disadvantages than advantages, or will this revolution like be an evolutionary step for us? आई थिंक एआई का पोटेंशियल डिसएडवांटेज डिस्ट्रक्शन डिसरप्शन क्रिएट करने का काफी ज्यादा है। आई थिंक इट विल डिपेंड ऑन हाउ वी एंड अप यूजिंग इट। एज आई सेड, आई डोंट थिंक regulation has been as effective in the case of AI as it has been in the case of synthetic biology. So synthetic biology में भी जब CRISPR वगैरह invent हुआ था, तो there was a call initially, there was a call for a moratorium on using CRISPR, ठीक है, बिकॉज लोगों ने कहा कि नहीं, जब तक हम इसको फिगर आउट ना कर लें, इसको इसको आप क्लोज कर दें। बट देयर वाज अ वेरी कॉन्शियस डिस्कशन एंड डिबेट कि नहीं, मोरेटोरियम इज नॉट अ गुड आइडिया। वी शुड क्रिएट एथिकल रूल्स that under these XYZ circumstances only we should do gene editing, and we should never do gene editing in a situation where that edited gene could be inherited, ठीक है ना? तो आपको कोई अगर प्रॉब्लम है तो मैं आपको जीन एडिटिंग के थ्रू वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोई ऐसा आपके अंदर कोई ऐसा जीन नहीं क्रिएट करूंगा जो आपके आगे भी फॉलो। तो इस किस्म के रूल्स डेवलप हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी तक अनफॉर्चुनेटली इस तरह की रेगुलेशन, ऑल्दो बहुत सारी रेगुलेशन वेस्ट में हुई है, लेकिन मुझे ख्याल में अभी वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी भी प्राइमरीली जो है ना, वो बिग टेक के हाथ में है, और बिग टेक का ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसे बनाना है। Sir, तो for I am a lot more concerned about AI than I'm concerned about synthetic biology. we've seen throughout history that laws and regulation for technology and development has always been slow, like by the government. So do you think that the government will like speed up its pace in making fast regulations and laws for keeping AI in control, or will it be like how it has always been? तो गवर्नमेंट्स कोशिश कर रही हैं। आई थिंक गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड आर ट्राइंग, द यूरोपियन यूनियन इज ट्राइंग वेरी हार्ड, द यूएस गवर्नमेंट हैज आल्सो स्टार्टेड ऑफ विद सम ऑफ इट्स ओन रेगुलेटरी सिस्टम्स। आई थिंक टेक्नोलॉजी इतनी न्यू है, और टेक्नोलॉजी लैग बिहाइंड, रेगुलेशन लैग बिहाइंड इस वजह से भी करती है क्योंकि टेक्नोलॉजी जब न्यू होती है तो उसकी हमें अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती, right? So it takes some time for us to kind of understand how this is going to evolve. I am, for example, of the view कि हमें एआई को रेगुलेट नहीं, एआई की टेक्नोलॉजी को रेगुलेट नहीं करना चाहिए, हमें इसके यूज को रेगुलेट करना चाहिए। जहां पे हमें यूज में हार्म नजर आए, हमें उसको फौरन से रेगुलेट करना चाहिए, राइट? सो समटाइम्स रेगुलेटिंग टेक्नोलॉजी इज नॉट अ बैड आइडिया, इज नॉट अ गुड आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, हमारे केस में, पाकिस्तान के केस में, हमने 3D प्रिंटर्स को रेगुलेट कर लिया, 3D प्रिंटर्स के यूज को रेगुलेट नहीं किया, ठीक है? उसकी वजह से पाकिस्तान में प्रॉपरली 3D प्रिंटर्स कभी आ ही नहीं सके, और पूरी दुनिया 3D प्रिंटर्स यूज कर रही है। और हमें इस चीज का खौफ है कि जी 3D प्रिंटर्स से लोग जो है ना, पिस्टल्स बना के जहाज अगवा कर लेंगे, राइट? पूरी दुनिया में 3D प्रिंटर्स यूज हो रहे हैं। सिमिलरली, हमारी स्टेट बैंक ने कभी क्रिप्टो करेंसी को रिकग्नाइज नहीं किया। पूरी दुनिया क्रिप्टो करेंसी यूज कर रही है, और लोग इसको बड़े मेजर्ड तरीके से यूज कर रहे हैं। कुछ मुल्क इसको प्रमोट करते हैं टू द एक्सटेंट दैट इट दे कैन लेट इट प्रमोट, and then they clamp down on it. You should at least let the technology go to the extent that you can see whether it is beneficial or harmful, and then you should regulate it. अगर आप टेक्नोलॉजी को फर्स्ट इंस्टेंस में ही रेगुलेट कर देंगे और स्टॉप कर देंगे, तो उसका फायदा ही नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि ये यूजफुल थी कि नहीं थी, राइट? सो क्रिप्टो करेंसी इज वन एग्जांपल जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अलाउ करनी चाहिए थी, लेकिन स्टेट बैंक ने कभी उसको रिकग्नाइज नहीं किया, कभी अलाउ नहीं किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में क्रिप्टो पे कोई काम नहीं हुआ, राइट? तो आई फील के टेक्नोलॉजी रेगुलेशन इज इटसेल्फ अ वेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड। मुझे लगता है कि सिंथेटिक बायोलॉजी केस में ये चीज सही हुई है, और एआई के केस में अभी तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं, और एआई में चांस है कि वी कैन कॉज अ लॉट ऑफ हार्म इफ वी डोंट गेट इट राइट। सर, जैसे आपने मेंशन किया एआई की वरीज हैं, सिमिलरली डोंट यू थिंक आपकी जो वरीज हैं अबाउट सिंथेटिक बायोलॉजी,
स्पेशली जो डिस्पैरिटी होगी बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिकल सेक्टर्स के, किसी को बेहतर एक्सेस मिल रही है, किसी को कम मिल रही है, वो इनएविटेबल है और वो स्टिल एग्जिस्ट करेगी बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट, जो हमारा कल्चर है टू प्रमोट प्रॉफिट. और सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज के in the book you said the founder Christopher mentioned ke is a life which is perfect worth living, but then again life के अंदर health के अलावा different issues भी हो सकते हैं. For example collaboration with humans, आपके marital problems भी हो सकते हैं. So don't you think problems outside of health issues can still make your life not plain and boring and a bit more complex? नहीं तो देखो, सिंथेटिक बायोलॉजी सिर्फ हेल्थ तो नहीं है ना, सिंथेटिक बायोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं, राइट. इट्स ऑल ऑफ आवर जेनेटिक मेकअप. ठीक है, इसमें सिर्फ हेल्थ नहीं है, इसमें हमारे बिहेवियर्स भी चेंज हो सकते हैं, इसमें हमारी हर चीज. अगर आप एक सुपीरियर क्लास ऑफ ह्यूमंस बनाना शुरू कर देंगे और एक नॉन सुपीरियर क्लास ऑफ ह्यूमन पीछे रह जाएगी, तो क्या आपके ख्याल में उनके आपस में रिलेशन सही भी हो जाएंगे? नाउ यू कैन से कि यू नो वैसे ही दुनिया में हैव्स और हैव नॉट्स है, तो ये एक और कैटेगरी ऑफ हैव्स और हैव नॉट्स बन जाएगी, तो क्या फर्क पड़ जाएगा, राइट. आप ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, मे बी देयर इज सम ट्रूथ टू दैट आर्ग्यूमेंट, बट द थिंग इज, would you allow uh, just technology increase this difference between the haves and have nots on me? I think that's a question worth thinking about. This has been a great episode, and we've really enjoyed our discussion with you. And yeah, we really learned a lot. And thank you for joining us, sir. Thank you very much for inviting me. It was fun talking to you guys. I don't know how useful this is, but this is just some ramblings that came out at the last moment. Thank you so much, sir. Take Allah care. Hafiz.